एंड आप सबको मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएं। डम्पिटो मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलनेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। डम्पिटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सारे दुख दर्द डंप कर सकते हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, वो डिप्रेशन हो, आपके मूड स्विंग्स हैं, आपकी ओवर थिंकिंग है, यहाँ तक कि आप अपना वेट भी डंप कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल प्लेटफॉर्म। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार अरोड़ा से, जो हमें बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताएंगे इस चीज के ऊपर कि जब बिजली का बिल आता है और वो बड़ा बिल होता है तो हम सबको शॉक लगता है। He is going to share very nice tips with us how we can reduce the electricity bill and also how we can stay safe. From fire hazards due to electricity. अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी डॉक्टर राजेश के बारे में। डॉक्टर राजेश कुमार अरोड़ा obtained the BTech and Master of Engineering ME degrees in Electrical Engineering from Delhi College of Engineering. He completed his PhD in Grounding System from Dehradun. He is also a certified energy manager and auditor. Can you imagine? He has worked in 400 kV and 220 kV substations for more than 14 years. So we can get a lot of information from him. He has also worked as Deputy Director, Transmission and Distribution in Delhi Electricity Regulatory Commission for 3 years and 6 months. Presently, he is working in the Design and Engineering Department of DTL. राजेश जी का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड करता है वोल्टेज टेक्नोलॉजी, ग्राउंडिंग, सिस्टम डिजाइन ऑफ पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, computer application in power system, power transmission and distribution designing, regulatory business and affairs, etc. Rajesh has presented his papers in national and international seminars and written many articles for many leading magazines in India. So without taking much time, I would like to invite Dr. Rajesh on this platform of Zoom. पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है जो आप पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। Over to you, Rajesh ji. Thank you, ma'am. Thank you, Anita Rasin, ma'am, for nice introduction. And first of all, I would like to start with happy Makar Sankranti, happy Pongal, and happy Lohri to everyone. सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत बधाई. This session is going to be very different from my all other session. I will be talking in my regional language Hindi also, apart from the language English I use usually about the safety. ये दोनों language में रहेगा ताकि maximum लोग इसका benefit उठा पाए. Now I am going to share my screen. Gulab, is it visible? Yes, sir. Okay. And today I am going to talk about how to reduce our electricity bill and ensure electrical fire safety at home. Purpose है अपने electricity bill को कैसे कम करें और कैसे ensure करें fire safety हमारे घरों के अंदर. And I am with you, Dr. Rajesh Arora, एक learner. And I always start my all webinars with Thanksgiving ceremony. सबसे पहले जिन लोगों का मेरे जीवन में योगदान है उनको अगर मैं नहीं याद करता तो that will be my fault, मेरा failure होगा. First of all, from the core of my heart, I would like to thank my family, my parents, my wife, my son. When I talk about my mentors, the respected P.P. Wise साहब, अंजलि चंद्रा मैम, K.K. मूर्ति साहब, S. Pao साहब, N.K. मित्तल जी, K.K. गुप्ता जी, P. रामाचंद्रन सर, हितेश चौहान जी, कमल बंसल सर. अब बात करेंगे, now we will talk about the friends and the well-wishers, साकेत गुप्ता जी, अरविंद ठुकराल जी, दिनेश सिंह जी, बत्रा जी and विशन दत्त जी. अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया. The last but not the least, my team members working day and night 24/7
for making this show to happen. Gulab and Ramdhani. Friends, we have two options. The very first option is we become the fashion creator or we just become the follower. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फैशन को क्रिएट कर दें या उस फैशन को फॉलो करें. और मैंने एक फैशन क्रिएट किया है, वो फैशन है सेफ्टी का. आई हैव क्रिएटेड वन फैशन ऑफ सेफ्टी. आई वांट टू मेक माय इंडिया फ्री ऑफ एक्सीडेंट. मैं चाहता हूं कि मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे घर के आसपास जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो कम से कम हो. एंड सेकंड ऑप्शन इज टू बिकम ए फॉलोअर. यस, ये जर्नी है. इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड द जर्नी एंड द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग मी एंड द मेनी पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड मी. बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बहुतों ने जुड़ना है. ये जर्नी लंबी है क्योंकि जर्नी देश के लिए है. ये इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ माय नेशन, इट्स मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ माय इंडिया, इट्स मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ माय सोसाइटी. देश की सोसाइटी की बात करनी है हमने. हम बात करें तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं जब हम घरों के गैजेट्स की बात करते हैं. एक ऑप्शन होता है रन टू फेलियर. हम इंतजार करते हैं, वी वेट फॉर दैट इक्विपमेंट, दैट गैजेट टू फेल. वी डोंट डू एनी मेंटेनेंस, हम ध्यान नहीं देते. एक होता है शेड्यूल मेंटेनेंस, फिक्स टाइम, कि हमें बताया गया कि 3 महीने बाद ये करना है, 3 महीने बाद ये करना है. एंड वी डू मेंटेनेंस एज पर द शेड्यूल गिवन बाय OEM, जो आप जिससे आपने परचेज किया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं. तीसरा होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, दैट इज रियल टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ योर इक्विपमेंट. जो आपको रियल टाइम में दिखता है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं. अकॉर्डिंगली यू आर टेकिंग डिसीजंस, क्या कब क्या काम करना है. और हम बात करते हैं सुनील सूद साहब की, जिन्होंने बहुत अच्छा सस्टेनेबल इंडिया की बात करते हैं. ही ऑलवेज टॉक अबाउट 5P. इस दुनिया में 5P है. एक प्लेनेट है, एक पीपल है, प्रोस्पेरिटी है, पीस एंड पार्टनरशिप है. हम इन सब को साथ लेके, इन सब की बात करके, हमें बिजली भी बचानी है, हमने सेफ्टी भी रखनी है. वी हैव टू इंश्योर रिडक्शन इन electricity uses. At the same time, we have to ensure electrical fire safety at home. We have to take care of both the things. Here start my presentation. We are all worried about electricity bill. Yes, electricity bill को देख के सबके पसीने छूटते, सबका budget. It disturbs our budget. Now the question is how to get rid of that anxiety, that issue. अब इससे बाहर कैसे आना है? It's a big challenge. आप भी वरीड है, मैं भी वरीड हूं, हर कोई वरीड है. अब इसको समझने के लिए, to understand that thing, I have developed based on all the studies, say thumb rule, RR. Yes, I am repeating RR, ARE dash R. Now I am going to explain what that thumb rule is. First, A says, change your habits and avoid use. For example, आपको हीटर यूज करना है. अगर आपको हीटर नहीं भी यूज करेंगे, यू कैन टॉलरेट सम काइंड्स ऑफ विंटर. आपको कपड़े प्रेस करने हैं सर्दी में, इट इज नॉट नेसेसरी टू आयरन योर शर्ट. चेंज योर हैबिट्स. विथ change your mindset, your habits, you can avoid the use. The first A in that thumb rule says avoid the use. It will help you to reduce your electricity bill. जब जरूरत ना हो उपयोग ना करें, बिजली के उपयोग से बचें. Avoid use of electricity when not needed or when it not in use. And try to change your habits. And your habits can bring change in your mindset, and that mindset will definitely help you to reduce your electricity bill. Second thumb rule says use your gadgets smartly. Okay, that means you have to reduce use of electricity. I have seen many people using the AC, but they are using the blanket. Blanket भी पहनते हैं और AC भी use करते हैं. We have to use AC at our comfortable zone. We have to keep our thermostat setting at 26 degrees. That is a comfortable zone. It is not necessary to run your AC at 21 degrees and wear a blanket.
ब्लैंकेट पहने और 26 डिग्री 21 डिग्री पे करें, इट इज ऑफ नो यूज। चेंज योर हैबिट्स, यूज योर गैजेट स्मार्टली। आपके पास फ्रिज है आपका, उसका सेटिंग चेंज कर दीजिए, कंफर्ट जोन में आइए। All these things matters. All small things will bring change in the society. Then comes E, replacement of gadgets with the energy efficient. Change your LED, change your 0 watt bulb. जब हम बात करते हैं 0 watt bulb, that is not 0 watt, that is consuming 15 watt. Replace it with LED. Incandescent lamp, आपकी ट्यूब लाइट सब एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट से रिप्लेस कीजिए। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर बिल। हेल्प करेगा श्योर। आप स्टार रेटेड गैजेट्स परचेज कीजिए, हेल्प करते हैं आपको हेल्प करेंगे। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दैट लिस्ट, E, that is switch over to renewable energy. That is the RR. This is the last R of that thumb rule. Try to switch over to solar PV at your rooftop. हम घरों की बात करें तो आपके पास अगर स्पेस अवेलेबल है और आप सोलर लगा सकते हैं तो आप अपना यूज भी कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट इट विद ग्रिड, यू कैन हेल्प द सोसाइटी ऑल्सो, यू कैन हेल्प द power utility to reduce their installed capacity. आप उस यूटिलिटी की भी हेल्प करेंगे। This is about the rules, small fundamental rules of RR to take care of bill. Apart from that, I will show you another thing. If you look at your electricity bill, there is one important factor, MDI, maximum demand indicator. ये maximum demand indicator gives information about the maximum demand happened at your home. अब लोग क्या करते हैं, एसी भी ऑन कर देते हैं, चारों एसी एक साथ ऑन कर दिए, they switch on all the ACs at a time. Then the maximum demand for that particular premises goes high, वो हाई हो जाती है। जब वो आपका MDI ज्यादा आएगा तो the utility people will automatically change your कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, फिक्स चार्जेस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपने सपोज 2 किलोवाट का मीटर लिया था, आपका एमडीआई 4 आ गया तो वो 4 कर देगा। 4 करते ही जो आपके फिक्स चार्जेस, 2 चार्जेस, फिक्स चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस बढ़ जाएंगे। इट विल इंक्रीज योर फिक्स चार्जेस। अर्लियर यू आर पेइंग फॉर 2 kilowatt fixed charges, now you will be start paying for 4 kilowatt, 5 kilowatt, whatever the MDI comes. Be smart. Take care of that thing. You can control your MDI, use your equipment smartly, ताकि आपका fixed charges ना बढ़े। This is the small tips related to reduce your bill. Coming to the next part of safety. Electrical accident gives pain. आप कभी भी न्यूज सुनिए, whenever you come across any news in the newspaper, any television, social media, जब भी आप सुनते तो क्या होता है? You feel pain. It gives you stress. क्यों होता है? Why we have become thick skin? हम मोटी चमड़ी वाले हैं, हमें समझ क्यों नहीं आता? हम कब सुधरेंगे? Why don't we learn from past experiences, past accident? We wait for another accident to happen. हम वेट करते हैं एक और एक्सीडेंट का। इट गिव्स पेन, सबको पेन होता है। इट गिव्स मी पेन, इट गिव्स यू पेन। छोटे छोटे टिप्स मैं बताऊंगा जिससे आप एटलीस्ट घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर हजार्ड होते हैं, उससे बच सकते हैं। कृपया उस पर ध्यान दें। काइंडली लुक एट द स्मॉल टिप्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर to avoid all these electrical accidents that give us pain. चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us understand the facts. In the present era, there's spelling mistake, don't look at that one. That is era. There is one thing which is loved, liked by everyone, in fact difficult to live without it. आज के जमाने में एक ऐसी चीज जो सबको पसंद है, सब प्यार करते हैं और जिसके बिना नहीं रह पाते। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर एक ही है, और मोबाइल फोन। एक कहावत है, there is one proverb, the charity start from home, and
जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। और 1000 माइल की जर्नी के लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, और पहला कदम उस इक्विपमेंट के साथ बढ़ाना है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आपके बच्चे, आपके लव्ड वन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सब यूज करती है, दैट इज द मोबाइल फोन। यू कांट लिव विदाउट दैट वन। देन कम्स द चार्जर। अब इस मोबाइल को चलाने के लिए यू नीड वन चार्जर। नेवर परचेज लोकल चार्जर। ऑलवेज लुक एट दिस सिंबल, square in square, that ensure double insulation. Look at this IS 13252 part 1 और IC 60950 part 1। आप कभी भी चार्जर लें, उस IS नंबर को देखें। ये जो दो आयताकार चित्र हैं, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, that ensure the double safety of insulation. Look at that square in square, that ensure the safety. Look at the IS number 13252 part 1. Unless until you find that two symbols, that IS and IC number 60950 part 1, जब तक ये ना दिखाएं तो आप लाख रुपए का मोबाइल ले लेंगे, 50,000 का लेंगे, लेकिन चार्जर लोकल नहीं लेना। आपको उतना ही ध्यान इस चार्जर पे देना, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैजेट। चाहे वो आपका लैपटॉप का गैजेट हो, वेदर इट्स अ गैजेट ऑफ योर लैपटॉप और एनी अदर इक्विपमेंट, यू हैव टू गिव फुल अटेंशन टू चार्जर यू आर यूजिंग। अब घरों के अंदर ये स्थिति आपको देखने, इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर हाउसेस। वी ओवरलोड आवर आउटलेट्स और एक्सटेंशन कोड। एक्सटेंशन कोड ये टेम्परेरी अरेंजमेंट, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इट्स नॉट अ परमानेंट। एंड यू स्टार्ट ओवरलोडिंग। उसका इनपुट एक है, 6 एम्पियर के स्विच से चल रहा है, और उसके ऊपर 25-30 एम्पियर का आपने लोड डाल दिया। व्हाट विल हैपन? आप इनवाइट करें, यू आर इनवाइटिंग एक्सीडेंट। प्लीज avoid it. Yes, please avoid it. When all your appliances are not in use, unplug it. It will help you to save energy as well as to minimize the risk and shock and fire. जब यूज में नहीं है, उसको, उस प्लग को आराम से उतार के रख दीजिए। यू जस्ट अनप्लग इट, स्विच ऑफ कर दीजिए। ध्यान दीजिए इन सब चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के। लूज कनेक्शंस मस्ट बी अवॉइडेड। लूज कनेक्शन कहीं भी दिखे आपको उस इक्विपमेंट्स को ऑफ करना है, उसको टाइट करना है। whenever you come across any loose connection, just switch off your gadgets, make it tight, then again start using it. Okay, प्लीज ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सीरीज स्टार्ट है। I have started this series to aware people, and this time I'm trying to convey everything in very simple manner. I'm not talking anything technically. Purpose है to make my nation, to make my society free of accident. हमें ये सब करना है। आपके सभी क्वेश्चंस आप 24/7 यू कैन कॉल मी। आई हैव गिवन माय नंबर। नीता मैम के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर मैं शेयर करूंगा। whenever you come across any relation, any issue related to electricity and safety, you can call me. I am available. Yes, I am available 24/7. I assure you, I will answer you. Extension cord is a temporary arrangement. Don't make it fixed. I have seen many houses, they are using extension cord as a permanent arrangement. I visited one house of my relative. They are using that extension cord at the top of their bed. अपने बेड के ऊपर लगाया, फिक्स किया हुआ, and they are charging so many equipments through that. They are taking load from that temporary extension cord. That is temporary, dear. We have to take care. That's not a permanent solution. वो 6 एम्पियर की एक्सटेंशन कोड के ऊपर 20 एम्पियर का लोड डालते हैं। दैट 6 एम्पियर एक्सटेंशन कोड कांट बियर लोड ऑफ 20 एम्पियर। टेक केयर, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन कोड पे हीटर हैवी लोड डाल देते हैं। नेवर प्लग स्पेस हीटर heavy load into extension cord or power strips.
एक हीटर 1000 वॉट का है, 2000 वॉट में 2 उसके हीटर चलते हैं, आप उसको एक्सटेंशन कोड पे लगा दें जो 6 एम्पियर का है. How can you use heavy load, heavy heaters that itself consume 2000 watt on a 6 ampere extension strip or power strip extension cord? Why are you putting the life of yourself and your family into danger? आप क्यों खतरे में डालते हैं जीवन को? Precious life है. को जागना है, हमें जागना है. Time to wake up. It's a wake up call. Please सोचिए इस बारे में. Never run course under rugs, carpets, doors or window. आपने एक अच्छा सा कारपेट बिछाते हैं, you just decorate your dining hall with a carpet and you run your course beneath that carpet. Don't do that thing. All the electric wires should be visible. दरवाजों के पीछे आपके खिड़कियों के नीचे आ जाते हैं वो. जब भी मूवमेंट, whenever there is movement of doors and windows, every time you open it or close it, there is deterioration, some deterioration of the insulation of that coat. उस insulation, जो insulation है तार का, वो टूटता है. आप खतरे में डाल रहे हैं अपने जीवन को. हमें सीखना है. कब तक इंतजार करेंगे कि न्यूज पे एक्सीडेंट होते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? जागो. We have to make people aware. We have to make all our people in the vicinity, in our network, हमारे नेटवर्क में, हमारे पार्क में, हमारे रिलेशन में जो भी है, उनको अपनी तरफ से जगाना है, अपनी तरफ से अवेयर करना है. Extension cord lying on the surface or your floor, you have to make sure extension cord do not become the tripping hazard at all. आप चल रहे हैं, आपका ध्यान ऊपर है, you don't look at that wire moving on that floor. Please be careful. छोटे छोटे टिप्स. Combustible materials should be away from your heaters. Keep papers and other potential combustible at least 3 feet away from the space heater and other heat sources. What you need to fire start? You need oxygen, you need combustible material, you need some heat sources. आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, एक ऐसा पदार्थ जो जल पाए, और आपको ऑक्सीजन और हीट सोर्स चाहिए. आप वो क्रिएट कर रहे हैं. हीटर दे रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, और कंबस्टिबल मटेरियल जो जलनशील पदार्थ है वो आप उसको पास लाएंगे तो आग लगेगी. बी केयरफुल. छोटे छोटे टिप्स will bring change, big change. Make sure you use proper rating illumination fitting for illumination lamps. आपने एक मार्केट से परचेज किया, you purchase one illumination system fitting suited for 100 watt. But what happens at the end of day? You insert 200 watt lamp in that the same illumination fitting. जो illumination fitting है वो 100 watt के लिए ली और आपने उसमें 200 watt का बल्ब लगा दिया. अरे that should not be done. छोटी छोटी चीजें हैं. Make sure use proper rating. Illumination fitting for illumination lamp. आपको और मुझे ही करना है ये सब. हम जिम्मेवार हैं. We are responsible for safety in our house. अगर पॉसिबल हो पाए, make sure your home has smoke or fire detection alarm and replace the unit every 10 years. 10 years is not a fixed one. You have to look at, you have to do the maintenance, you have to look at the condition monitoring also. अगर पॉसिबल हो पाए तो घरों में आग का पता लगाने वाला अलार्म लगाएं.
उसकी मेंटेनेंस करें, उसका कैलिब्रेशन चेक कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा फेवरेट टॉपिक, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेफ्टी ग्राउंडिंग, and that should be based on the requirement of site. We always talk about chemical earthing or magical earthing, digital earthing, 1 ohm resistance. बात करेंगे chemical earthing की और digital earthing की। 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. 1 ohm is not ensure the safety. 1 ohm never ensure the safety at your home or any premises. 1 ohm ensure नहीं करता। आपको उस साइड के अकॉर्डिंग अर्थिंग डिजाइन करनी है। आपको you have to understand the earthing arrangement, TT system, IT system, TN system, TNC system, TNS system, क्या सिस्टम यूज हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इनटू इंटीग्रेसी डिटेल अबाउट दैट अर्थिंग सिस्टम, उसकी बात नहीं करूंगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग आपको देनी है अपने घरों में। इग्नोर नहीं कर सकते आप इस बात को। MCB or RCCB, proper selections of MCB, RCCB or any other protective device. What you do, you feel you have installed your MCB of A rating or B rating or RCCB of a particular rating, you feel you happy, yes, you are safe. My dear, we have to select our MCB based on our requirement, based on my for loop impedance. हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मार्केट में गए, वी गो टू मार्केट, वी परचेज व्हाटएवर इज अवेलेबल। इट मैटर्स, यस इट मैटर्स अ लॉट। आपका MCB लगा होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर रेटिंग का, ताकि जरूरत पड़े तो ऑपरेट हो। इट शुड ऑपरेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज नीडेड, अदरवाइज इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव डिवाइस। उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, उसका उस काम उस समय पे काम नहीं किया तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो बेकार हो जाएगी। सोचिए इस बारे में। हार्मोनिक्स, हम घरों में वी आर यूजिंग द गैजेट्स, वी आर यूजिंग आवर माइक्रोवेव्स, वी आर यूजिंग इन्वर्टर AC, वी आर यूजिंग अदर इक्विपमेंट्स, ऑल दीस आर क्रिएटिंग हार्मोनिक्स। हमें इंश्योर करना है हम जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं उसका हार्मोनिक लेवल, और वो हार्मोनिक लेवल जो हमारे रेगुलेशंस जो हमें बताते हैं उसकी लिमिट्स में हो। हार्मोनिक्स भी कारण बनते हैं। इट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द कॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स योर न्यूट्रल करंट इंक्रीजेस, आपका न्यूट्रल में करंट बढ़ता है। और जब करंट बढ़ता है, when there is increase in the current in the neutral, it creates heat जनरेट होती है, हीट कारण बनता है आग का। थिंक अबाउट इट। वायर एंड केबल्स फॉर योर हाउसेस, हमें टाइप 2, टाइप 5, टाइप 6 सिलेक्शन प्रॉपर ध्यान से, वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर type of cable we are going to use for our houses, for our offices. It is not like that you just go to any shop and purchase whatever is available. Aware yourself, aware your relatives, your friends, proper size, proper type का wire, proper insulation. In wire there are two things, conductor or insulation. There are two things in a wire and cable, insulation and conductor. Proper cross-sectional area of that conductor, that will take care of the heat cross-sectional area, and insulation that will take care of stress. एक कंडक्टर जो आपका हीट को ध्यान रखेगा, और एक इंसुलेशन एंड दैट विल टेक केयर ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन दैट केबल। दोनों को अच्छा लेना है, प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना है। सोचिएगा इस बारे में। हर गैजेट्स एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यूज गैजेट्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड नॉट टू यूज आउटडेटेड, आउटलिव्ड, डैमेज गैजेट्स और अप्लायंसेस। जो खराब है, जो आउटडेटेड हो चुका है, जो आज इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है,
उन अप्लायंसेस को यूज करने से बचें. It can become cause of fire any time. किसी भी टाइम ये आपको धोखा देगा. ये किसी भी टाइम धोखा देगा. Think about it. In the beginning, I talk about the condition monitoring, maintenance. We have to do it. हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है. अगर जरूरत पड़े तो हमें कंडीशन मॉनिटरिंग भी करनी है. हमें we don't want to run our equipment to failure. RTF से बचिए. Maintenance pays. Maintenance of equipment always pay back. हेल्प करती है आपको. सोचिएगा इस बारे में आप. Never use outdated damaged equipments. आप ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी डैमेज इक्विपमेंट्स मुझे कुछ नहीं करेगा. इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रेंड ऑफ नन. किसी का दोस्त नहीं है. When you are making any mistake, it won't spare you. It won't forgive you. There is no word of forgive. There is no forgiveness in the dictionaries of electricity. Electricity की भाषा में कोई माफी नहीं है गलती की. Think about it. आपने जब रिले लगाई उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है. You have to do the proper protection system coordinate. It means first you have to take care of the rating of MCB in the beginning. Then downstream that should be reduced. It should not be like that at downstream the rating is more than the incoming rating of MCB. लोड पे MCB आपने लगा दी 16 की, इनकमर पे 6 की. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है. You have to take care of some expert electrician, some expert engineer. सोचिएगा इस बारे में. Think about it. This is a very last but very important point. Regularly inspect and test electrical cords, extension cord, electrical gadgets and electrical circuits for damage. हमारा एक बाइबल है IS 732. We have one Bible code of IS 732 wherein all that inspections and validation and verification points list is there. उसमें कुछ लिस्ट दी है, कुछ टेस्ट करने हैं हमने. काइंडली उसको फॉलो कीजिए. काइंडली फॉलो दिस टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड एज पर दिस IS 732. डोंट टेक इट द सेफ्टी फॉर ग्रांटेड. इसको सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना है. डोंट इग्नोर सेफ्टी. गिव योर फुल अटेंशन. ये हमने एक शुरुआत की है लोगों को जगाने की. एंड आई एम थैंकफुल टू नीता बसीन मैम जिन्होंने मुझे ऐसा करने का मौका दिया फर्स्ट टाइम हिंदी में इंग्लिश में. नाउ टाइम टू टेक ए प्लेस टू मेक आवर नेशन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड फायर एक्सीडेंट. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स बाय अप्लाइंग RR rules. Kindly write yes in your chat box if you are ready to follow it. And I feel आए एक प्रण लेते हैं ताकि हमारा देश, हमारा भारत, हमारा सोसाइटी एक्सीडेंट से फ्री हो पाए और हम अपना फर्ज निभाएं कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाए RR रूल को अपनाकर. आइए साथ दीजिए मेरा. ये जर्नी हम सबकी जर्नी है. इट्स नॉट जर्नी ऑफ Rajesh Arora, it's journey of everyone, and we have to participate there. We have to join hands. हमको मिलके चलना है to make our nation free of accident. And I am sure this is not the end. This is the new beginning. And thank you everyone for your patience listening. And with that, I am going to stop it. Thank you everyone.
Now we can take question answer, ma'am. And as I promised, I have finished in 30 minutes. Over to you, ma'am. Gulab, kindly allow ma'am to unmute. Yeah. Thank you so much, Dr. Rajesh. So I am very sure हम सब ने बहुत मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने ऐसा टॉपिक इतना खूबसूरती से कोई समझा सकता है. I am so ever grateful to you. You know, you have done such a wonderful job. मेरे को खुद नहीं पता था कि एक्चुअली कोई इतना समझा पाएगा डिटेल में कि नहीं. बट यू कहते हैं यू आर सुपर्ब. आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं हमने. एंड ये जो आपने एक बात बताई ना, फिक्स चार्जेस को ठीक करवाएं. यू नो, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. हम लोगों का बिजली का बिल ना 25,000 तक आ जाता था. एंड आई थिंक आई हर्ड इट समवेयर कि अपने एमडीआई को आप चेक कराएं, चेंज कराएं. You won't believe, over a period of time, now it has come to 900 rupees. And I must tell everyone जिन्होंने ये सुना है, follow the tips that have been given by Dr. Rajesh. Personally, मैंने तो एक चीज को समझा कि रक्स के नीचे भी कॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, बहुत घरों में होते हैं. That was so beautifully, you know, आपने खूबसूरती से उसको समझाया. कई बार हम इग्नोरेंट हो जाते हैं इन चीजों के. एक सवाल आया है कि जो आपने बोला ना, कोई आपका गैजेट डैमेज हो जाए तो उसको यूज नहीं करना. यहाँ पे डैमेज से क्या मतलब है? somebody wants to ask what is the मतलब of damage. देखिए मैम, in every gadget there are two things. One is your insulation part, second is your conductive part. When I say damage, damage means either it has loose connection, its wires are open, or its insulation are deteriorated or damaged. When your insulation is damaged, it won't be able to take stress. जब आपका insulation weak होता है ना, तो stress नहीं ले पाता. Voltage basically kinds of stress on your system. अब वो इंसुलेशन आपका वीक है, आपने वोल्टेज दे दी, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट स्पार्क. तो यू मे गेट ए शॉक, देयर मे स्टार्ट फायर. तो डैमेज को बचना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ, वी डोंट हैव टू यूज आउटलिव्ड, आउटडेटेड एंड डैमेज्ड इक्विपमेंट्स इन आवर सिस्टम एट ऑल. और एक और चीज पूछना चाहते थे. आपने एक तरफ जगह बोला रिप्लेस गैजेट्स विद एफिशिएंट, सम स्टार बोला था आपने. क्या स्टार बोला था? स्टार रेटिंग. बेसिकली आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी आप शॉप में जाएंगे, वहां स्टार लगे होते हैं, स्टार रेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं. एंड इंश्योर द एफिशिएंसी. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, up to 5 star ratings are there. Okay. So we have to take which star? Depends on your financial position. Otherwise, always the 5 star is more efficient than 1 star at all. Okay. Thank you so much for your answer. That was much needed. हमें भी इस चीज का पता नहीं था. जी. And thank you so much, Dr. Rajesh, for coming on our platform. Because ये like हमारा platform जो है, that is for mental health and you know, holistic wellness. और ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है. शॉक में जाके लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं. मैम, मेरे 2 mentors बैठे हैं and I would like to invite them to definitely say, please invite them. Aisha and Apau sir, kindly unmute one by one. Hello. Yes sir, please. Hello. Are you getting Rajesh, my voice? Yes, we can hear you. Yeah. Yes, ma'am and Rajesh, good afternoon. This is, I think I must thank ma'am giving opportunity to our colleague, Dr. Rajesh Arora. I rate Dr. Rajesh Arora as one of the pioneers in the country. As I
recently have started designating me as a gem, as a stalwart for the country, because he has taken a lot of pains in the last 5 years, educating people, doing conferences, and reaching the people, see every corner of the nation. So he is one guy. I really love him from the core of my heart. Today you would have heard him, and whatever he says from the heart. He has worked behind the scene. He would have worked too hard. I tell you, he doesn't sleep for nights together. I know it. ये रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह फिर 6 बजे शुरू कर देते हैं. जब भी इनसे आपने, and you would have heard his words that I am to anybody an open invitation. किसी को भी मेरी जरूरत है 24/7, तो आई एम अवेलेबल. इससे बड़ा sacrifice क्या हो सकता है? मतलब anywhere in the country, you see, anybody can talk to him. So I think I salute him, you see, I salute on behalf of all of you for the presentation he has given today. It really touched my heart as well, and I think it will have touched the heart of many other who are listening him and will listen to him. And I say a very important thing. There is a electrical engineering में भी हम बोल देते हैं कई बार एक system blindness है, एक system awareness है. So we have to, as very rightly said by Dr. Rajesh Arora, we have to create system awareness. We have not to keep the system blindness with us. System blindness क्या होती है कि घर में तारें ऐसे लूज पड़ी हुई हैं, फिर भी रोज की हमें आदत पड़ जाती है आगे से निकल जाने की. तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि जैसे डॉक्टर राजेश कह रहे हैं, तो वो उनके शब्द को जागृति के साथ, यही उनको ट्रिब्यूट है, यही उनको एक हम अप्रिशिएट कर कि उनके शब्दों को अपने दिल के अंदर 100% बांध के रखें और अपना रेजोल्यूशन करें कि भी हम सारे लोग मिलके एक्सीडेंट. इन्होंने पीछे जगह जगह जाके he has made a determination कि I want to make the country free from accident, zero accident in the country. So he has made that resolution in his mind. So he is doing all his best. We have to give our cooperation, and very rightly he has repeatedly said to us कि हम सब लोग इसमें योगदान करें, अपना जो भी पॉसिबल हो सकता है. और नॉट दैट आप मैम, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज देन I'll finish. आप ये देखिए कि जो इन्होंने स्टार्ट बात की पेन की, एक एक्सीडेंट होता है तो हमें पेन होता है, इन्होंने स्लाइड अभी दिखाई थी. आई से आप ये इमेजिन जरूर करिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, कि जिस घर में एक डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, वहाँ एक जो एक मेन आदमी है, वो लाइफ जो ब्रेड अर्नर है, वो खत्म हो गया, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, कहाँ तक उसका इम्पैक्ट है एक एक्सीडेंट का. तो अगर हम सब लोग अपने, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ही यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो सारे अगर हम लोग 1 by 1 अगर अपना अपने घर को संभाल लें, तो नेशन will be free of accident. And that the objective of Mr. Rajesh Arora, the mission he has started, I think it will be fulfilled in a very meticulous manner. And I say we should take a pledge, all of us, that we should go with what has been advised by him. Everything he has very beautifully, and I really appreciate you when you have said the words. Case this presentation has been very beautiful. I join you, beautifully been made out to us, before us, by Dr. Arora. We salute him once again, and we thank you also for arranging this presentation from him. All my best wishes. Good luck to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. As above, sir, kindly unmute and say a few words. Right. Good afternoon. Sir, your voice is not coming. You are muted, sir. Happy Pongal, first of all. Yes, I think now you can hear my voice. Do you hear? I'm audible? Yes, you are audible. Happy Pongal, sir. And good afternoon once again, Mr. Rajesh Arora ji. And I would like to thank Madam Nita Bashin for correctly identifying the correct person to have awareness among the domestic users. Because as per NCRB, National Crime Records or Bureau of Records, every year we are losing so many lives due to electrocution and fire.
most of them are nowadays turning towards the domestic. We can say that domestic premises are highly unsafe in our country because of various reasons. For which he has given a beautiful often it's so a minimum time, within the shortest time he was capable of creating awareness among people. But I would like to supplement, because he is also an energy editor, I am also an energy editor. There is always a difficulty between energy conservation and safety. Whenever a conflict comes, we used to say that safety prevails over conservation. So what I can say is save yourself before saving energy. There are a lot of gadgets nowadays. People, we can't expect the domestic premises occupants to be conversant with all such highly technical nature of electrical installations. Only Arora ji and PP Wagi ji and so many people, the experts can attribute correct reasons, but I don't think that a common man in domestic premises will be not knowing all these things. But what we can suggest is you employ a good licensed electrician and electrical contractor and know the basic ideas about the gadgets that you are using and minimize the what do you call the maintenance nature of intervention that you can do to safeguard yourself and your equipment. The real concern is that we are having a lot of what do you call the accidents due to AC, air conditioners. They are causing a lot of accidents. Chennai suburb also we have few accidents. After analyzing those accidents, what I can say is, with effect from January this year, 2023, the air conditioners have also been brought as a mandatory product under BAS, because there are a lot of mandatory products under IS 302, household appliances like geyser and other things, so that people will be safe at their home. So they have to get such a product, just like star labeling. You should have the product manufactured unless you have it mandatorily certified by BAS. So AC is also coming into that hold now because of analyzing after so many electrifications in our country. So we all know that overload, short circuit, and air leakage, as propagated by Rajesh ji, would be a valuable suggestion to safeguard yourself in home, but do it with the consultants of electrician. You know, you better also should know something about the basic principles of electrical safety. And one important thing is the loose connection. The Rajesh Arora ji advised about the loose connections. It's very tough to have a safety measure for loose connections. We can have safety measure for overload, short circuit, air leakage, but not for the, unless you have it maintained. We can't expect a household person to have R plus detection device, everything. These are the latest concepts coming into picture. Anyhow, there are a lot of things to be identified and imported to the domestic market and installed in the domestic market to make them more safe and have a safer living in their homes. So I would again thank Mr. Arora ji and Madam ji for this opportunity. And one thing I would say again, this AC, I forgot initially. The thing is, after the promulgation of BAS, that AC is also becoming a mandatory product. I've identified with reference to IEC and IS. Mr. Arora ji, I would like to bring this up to the. I have also discussed with the person of members of ET20. You also being a member of ET20, please take it to the BIS. Because as of now, the AC units, especially the fan coil unit, is not having a proper protection. We have a total protection. Manufacturers do not specify what should be the type of MCB. We can't expect a common electrician also. Because I engaged an electrician, he told me, sir, you provide 20 amps C type MCB, otherwise it will trip. I insisted him. After reluctance, you put a type 16 amps, that is enough. Because of inverter and other
electronic gadgets coming, flooding our home, like LED and home. As you said, harmonics is also playing a vital role. So safeguarding the people from the hazards, as you said, these things should be incorporated in IS, BS, and BS, especially in BS. The things are, let the manufacturer prescribe the correct type and rating of MCF to protect their ACP against overload and short circuit. We can't expect the consumers. Another thing, let the manufacturer have some standards, because some standards are not prescribed in IS on the testing of AC units. Because AC units are the front cover, you can see it will be highly flammable. It's a flammable material. It is not tested. The no test, glow test is not prescribed in the IS for such AC units. We have to incorporate. It is not enough to promulgate that AC should be made BS certification. We should incorporate those tests also into picture, into the BAS. I request Mr. Arora ji to bring these additionalities to make our homes safe. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thanks a lot. Can you unmute me? Yeah. Okay. Yeah, so there's just one more question from a gentleman. He's saying, power reducing devices are available in the market. What do you say? Should we use it or not? Actually, there is no as such magical devices available that can reduce your electricity bill. They can control the power factor. They can just take care of the power factor. With power factor, to some extent, you can reduce your bill, but it's not a magical band. You have to say, reduce my bill. No, it's not like that. Okay. Thank you so much. So friends, with this, we'll come to the end of this session today. And I'm sure हम सबने बहुत कुछ सीखा है. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं. मुझे लगा था ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैंने डॉक्टर राजेश की बहुत सारी यूट्यूब पे लिंक्स देखे हैं जहां ये बहुत बेहतरीन तरीके से ही इज एक्चुअली वर्किंग वेरी इफेक्टिवली टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स. आप लोगों को भी टाइम मिले, आप जरूर लिंक इनका देखिए एंड यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही इज टॉकिंग इन इट एंड इट कुड बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू. एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म. आपके बहुत आभार. एंड हमारे सारे दर्शकों को भी thank you so much for being there, and please take advantage of this till we meet next time. Thank you. Thank you.